You're watching Dynamic Natural English. I hope that you must be enjoying your health. In today's session, we are going to be learning 10 important and useful phrases of English language that will make your English sound natural. These phrases are very interesting, funny, and using your own sentences and will enhance your communication skill. You will feel it. You will feel your language natural while using them because they are part of cultural heritage of England. That's why we have selected 10 those important phrases, and let's start them one by one to make your language sound natural. In today's session, we're going to talk about 10 important phrases that are going to make your English better than other people in Indian circumference. Here goes the first one: hang out. Means spend time relaxing and socializing informally. Whenever you pass time with your near and dear ones, your friends, your close relatives, means just enjoying with them, then use this phrase hang out. For the usage in a sentence, look into the sentence that I have made for you. Earlier, I used to hang out a lot with my friends of Air Force School Bamroli, but now we don't see each other for donkey's ears. पहले तो हम अपने बमरौली एयरफोर्स स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट करते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे फ्री टाइम में, लेकिन अब हम काफ़ी सालों से उनसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एक और फ्रेज है, यू सी डंकीज ईयर मीन्स फॉर मेनी ईयर्स. Now the second one, wine and dine. Wine and dine means when someone is treated to an expensive meal. जब आपको अच्छा खिलाया जाए, यानी कि किसी को भी जब अच्छा खिलाया पिलाया जाता है तो उसे वाइन एंड डाइन कहते हैं. Now here goes the sentence using this phrase. When the election comes, the MLA candidates wine and dine the prospective voters of their constituencies. जब इलेक्शन आता है तो एमएलए कैंडिडेट्स अपने प्रोस्पेक्टिव वोटर्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के खूब खिलाते पिलाते हैं. मीन्स अच्छा खाना खिलाना, ताकि वो अच्छा फील करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव डिशेस होती हैं, जिसको खा करके किसी को लगता है हाँ मैंने कुछ खाया है, मतलब कि दावत के तरीके से जब कोई उसको खा करके एंजॉय करता है तो वाइन एंड डाइन को यूज करते हैं. नाउ हियर गोज द थर्ड phrase in the list. Toss and turn means to not sleep well, to be restless. जब कोई नींद नहीं आती है और वो करवटें बदलता रहता है, टॉस एंड टर्न को हम यूज करते हैं. हियर गोज द सेंटेंस यूजिंग दिस फ्रेज. When he lost 1 lakh rupees by gambling in casino, he tossed and turned on bet through the night. जब उसने 1 लाख रुपए जुआ कसिनो के जुआ में हार गया तो वो पूरी रात बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, मीन्स बेचैन रहा पूरे टाइम. Now we are going to go ahead to look into the fourth phrase in the list, which is a wolf in sheep's clothing. A wolf in sheep's clothing means a person or thing that appears harmless but is actually dangerous or bad. जब कोई देखने में तो लगता है कि अच्छा है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है इससे, लेकिन वाकई में वो ख़तरनाक होता है, बहुत बुरा होता है, तो उसको हम अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग बोलते हैं. देखने में तो अच्छा है, भला है, लेकिन अंदर से बहुत बुरा है. नाउ हियर वी गोइंग टू यूज इट इन अ सेंटेंस. एनी बिल ऑफ द गवर्नमेंट वाज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. सरकार की कोई भी बिल जो होती है वो वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग होती है, मतलब बहुत खतरनाक होती है. नाउ हियर गोज द फिफ्थ फ्रेज, दैट इज गो टू द डॉग्स. मीन्स बर्बाद होना. डिटीरियोरेट शॉकिंगली, टू बिकम वर्स इन क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर. जब कोई चीज़ क्वालिटी कैरेक्टर में बुरी होती है, बहुत ख़राब होती है, तो हम उसको बोलते हैं यानी बर्बाद होना. गो टू द डॉग्स. लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस. द कंपनी इज गोइंग टू द डॉग्स ड्यू टू द लॉकडाउन. लॉकडाउन की वजह से कंपनी
बर्बाद हो रही है, और द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स ड्यू टू द करप्ट लीडर्स। करप्ट लीडर्स की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह के भी सेंटेंस हम गो टू द डॉग्स के साथ में बना सकते हैं। Now, sixth one is one's old flame, means one's former lover, someone who had a romantic relationship with in the past. कोई फॉर्मल लवर, ओल्ड लवर की जब बात करें, या रोमांटिक रिलेशनशिप किसी के साथ पास में था, उसके लिए ओल्ड फ्लेम यूज करते हैं। नाउ हियर इज द सेंटेंस, हेनरी वाज सीन डेटिंग एन ओल्ड फ्लेम। तो हेनरी को देखा गया कि वो अपने फॉर्मर लवर के साथ डेटिंग कर रहा है। Now here is the seventh one. Out of this world means to be extremely good. बहुत अच्छा जब कोई चीज़ होता है उसके लिए हम out of this world phrase को यूज़ करते हैं। इसको सेंटेंस को देखेंगे एग्जाम्पल में जो है phrase को यूज़ करते हुए। The sweet dish is amazing. It is out of this world. ये स्वीट डिश बहुत ही बढ़िया है, ये तो एकदम बहुत ही बेहतरीन है, अलग ही लगती है। Now, eighth one, drop off means to leave someone or something at a destination. जब किसी चीज़ को हम कहीं छोड़ देते हैं, छोड़ आते हैं, तो उसके लिए किसी पर्सन और थिंग को, तो ड्रॉप ऑफ को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रॉप ऑफ माय ब्रदर स्कूल बिफोर यू कम टू माय ऑफिस। ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आने से पहले तुम मेरे भाई को स्कूल छोड़ देना। Now next one, second last sentence, second last phrase in the list is rain on someone's parade, means to disappoint or discourage someone by ruining or criticizing their plans or aspirations. जब किसी को हम उसकी प्लान या उसकी जो चाहत है, जो करना चाहता है, उसको हम हिम्मत हार जाए हमारी वजह से, या हमारे कहने की वजह से वो हतोत्साहित हो जाए, तो रेन ऑन समवन्स परेड कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखेंगे सेंटेंस, आई हैड टू रेन ऑन योर परेड बट बीवेयर ऑफ योर राइवल्स। मैं तुम्हारे प्लान को बर्बाद तो नहीं करना चाहता, लेकिन अपने विरोधियों से बीवेयर रहना, यानी सचेत रहना, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो रेन ऑन समवन्स परेड मतलब किसी की प्लानिंग को बर्बाद करना, खराब कर देना। Now we are looking forward the last phrase in the list of today's session, which is to sleep tight, to sleep well, टू स्लीप साउंडली, बहुत अच्छी नींद में सोना। जब इसके लिए किसी को हम विश करते हैं तो ऐसा फ्रेज यूज़ किया जाता है अक्सर, गुड नाइट के साथ में इसको हम यूज़ करते हैं। लुक इनटू द सेंटेंस, डोंट हैव नाइटमेयर्स, गुड नाइट, स्लीप टाइट। तुम्हें बुरे सपने ना आए, रात के लिए तुम्हारी रात्रि शुभ हो, यानी कि शब बखैर। और स्लीप टाइट मीन्स स्लीप वेल, बढ़िया नींद आए, यानी कि बिना बुरे सपने के तुम्हारी नींद बढ़िया आए और रात अच्छी गुजरे, ऐसा विश करते हुए इस फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं। यू कैन हैव अनदर फ्रेज, अनदर sentence to use this phrase like, hey guys, good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite। इस तरह से ये फ्रेज़ आज का जो सेशन में हमने रखा हुआ था, सारे फ्रेजेस हमने कवर कर लिए हैं, और उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने के लिए। I hope that this session must be very useful and helpful to improve your communication skill. If you are able to learn them well, if you are habitual, you make practice a lot to be habitual of using them in your sentences, and then surely you will feel that your language is better than before. So enjoy it, practice it a lot, and make your language natural like
native speakers. Thank you for watching Dynamic Nature of English.